Well, explosive revelations by the former CBI director U.S. Mishra has put question marks on the autonomy of CBI. He admits to having dealt with political pressure while probing the Taj corridor case against Mayawati. Here's what U.S. Mishra, the former CBI director, had to say. When I was director CBI, I never spoke about pressure, particularly about Mayawati case. I had spoken in general that independence should be given to the CBI with respect to few things. Because CBI is completely controlled by government. Any political bigwig who is involved, director CBI gets instructions from some quarter or other, which is likely in a democracy. Not that I say that it is the force to do. Because investigation primarily is between the court and investigating agency. There is no third player in this. Third player is interference. So likely government has nothing to do with investigation. This is what I've been saying all along. I've been saying CBI should be given constitutional status like the CAG, like the Election Commission, like the Supreme Court, so that nobody can interfere in that. But unfortunately nobody will give it for the simple reason it doesn't suit the politician to have an independent body. This is a stark truth. Everywhere recommendations work, either love or money or context. सरकारी दबाव सीबीआई पर नहीं है, ये बात बार बार दोहराई गई है, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। पहले दूसरी सरकारों का भी नहीं होता है। हम तो अपनी सरकार का कह सकते हैं, हमारी सरकार का कोई दबाव नहीं है, दूसरों का मैं नहीं कह सकता। इस बात की और आवश्यकता है कि सीबीआई को ऑटोनोमस किया जाए। लोकपाल बिल जो सेलेक्ट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, सरकार उसको क्यों नहीं ला रही है? ये तो जग जाहिर है और इसको राहुल गांधी तक ने स्वीकार किया है कि सीबीआई पर जो सरकार में रहता है, थोड़ा बहुत उसका दबाव रहता है। इन लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि साहब सीबीआई जो है सरकार के कहने में चलती है, और इसीलिए कई मामलों में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी सीधे उसके इन्वेस्टिगेशन का मॉनिटरिंग करता है। तो ये आरोप जो है बिल्कुल सही बात है।